And welcome to Ashish Kyal Trading Gurukul. It's fantastic to have you all here and a wonderful day today. And we are going to look at markets की क्या करना चाहिए election exit poll आने वाले हैं कल के दिन में and साथ ही में we are going to have the election outcome on 4th, which is a Tuesday. So how to go about it and what are the markets suggesting? Correction आया है अच्छा खासा इस time election के पहले. Usually election pre-election rally होती है, market ऊपर बंद होता है in anticipation और करेक्शन नहीं आता है, लेकिन इस टाइम थोड़ा सा अलग है. वी कैन क्लियरली सी मार्केट्स करेक्टेड ओवर पास्ट 3-4 डेज गिविंग अ नेगेटिव क्लोज. आज बहुत अटेम्प्ट था ऊपर नीचे का एंड फाइनली इट मैनेज टू क्लोज जस्ट वेयर इट्स सपोज टू बी 22,530 के आसपास एंड 22,500 के नीचे जा गया, फिर 600 के ऊपर गया, बट देन finally it is where it was. It's always wonderful to be here speaking to all of you. तो very good afternoon, Dr. Shaw Sen. आप एक भी वेबिनार मिस नहीं करते. Shalini, always pleasure to meet the mentees. Suresh, Rohit Verma, it's great to see you also here on Friday at 4. It's going to be amazing. And very good evening to Rajesh, Shubham. Great to see you also, Sanjay. And what is expected as per wave theory, Bhavani Ram, Dilip, Rohit Kumar, Nitin, every one of you, and people who are watching this on YouTube, you can watch this on the Zoom platform. You can join me on the Zoom platform. I will just share the link across very quickly with all of you of the Zoom platform. Just give me a second. और आप यहाँ पर मेरे साथ में Zoom पे भी जुड़ सकते हो. Here is the link which I am sharing across of the Zoom platform, and do ensure you are here with me. और यहाँ पर करना क्या है, मतलब ऑप्शंस में बाय करके चलना है कि सेल करके चलना है. चलिए, चैतन्य विद्युत, always wonderful to have you also here on Friday at 4. It's going to be a monthly close which has happened. Absolutely, this is the May end and we have seen the monthly close. The Mohit Sharma is saying, sir, your levels are bang on. कल के दिन में 22,420 का लो लिखा था. किसी ने फॉलो किया था वो लेवल्स, एंड वहां से देखेंगे तो निफ्टी ने मोर देन 200 पॉइंट्स का मूव भी दिया ऊपर की ओर. इफ यू आर फॉलोइंग द लेवल्स दैट आई हैव बीन ट्वीटिंग एंड आई हैव ट्वीटेड इन द मॉर्निंग बिफोर द मार्केट today, so many of you who were waiting for me to start tweeting again in the morning, I started that. Do ensure you are following me on the Twitter handle. My colleague will share across the link very quickly of the Twitter handle. और आगे बढ़ने के पहले बहुत ही quickly, I am going to take a poll asking you all, what do you think is the market going to do in the coming week? Where do you think markets are going to be in the coming week? So I am just going to take a poll. यहाँ पे बहुत सारे पोल बना रखे हैं मेरे प्रोड्यूसर साहब ने. लेट मी जस्ट फिगर आउट विच वन, वेयर इज द मार्केट ट्रेंड गॉन, एंड लेट मी जस्ट फिगर दैट आउट. मार्केट ट्रेंड इन द कमिंग वीक. यहाँ पे मैंने पोल लॉन्च किया है वेरी क्विकली. ट्विटर लिंक मैंने शेयर करने बोला था आपसे, ट्विटर लिंक भी शेयर कर दीजिए. आपने टेलीग्राम शेयर किया एंड आई कैन क्लियरली सी, okay, many of you are bullish on the market. I can see that biasness. मैंने बल्कि मार्केट 3 बजे के आसपास ही ट्वीट किया that I'm betting on the upside in anticipation, but I can be wrong, right? Market is supreme. भाव भगवान छे तो market is supreme. I am betting on the upside and बहुत ही क्लियरली यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ, we have more than 80% of the people who are betting for the markets to move higher. So I'm just going to end the poll here very quickly and just sharing the results. Seema Khan, always wonderful to see you also here. It's fantastic to have you also here. Sudhir Taware, I have never seen any other person that you predict levels precisely. God of Elliott. Thank you very much for the kind words. Chaliye, I'm sharing the result. There are 81% people who are expecting markets to go up. 19% are expecting it to go down. तो मतलब अब मैं समझ गया आप लोग किसे वोट कर रहे हैं. I'm just stopping the result share very quickly. And यहाँ पर I'm also going to share across the WhatsApp community link before I move forward. WhatsApp QR code मैं share कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में. So everyone can join the WhatsApp community and give me a thumbs up if you have already joined it.
और इफ यू आर ज्वाइनिंग इट नाउ, गिव मी अ बिग थम्स अप। ये रही व्हाट्सएप कम्युनिटी, तो ज्वाइन कर लीजिए। आई एम जस्ट शेयरिंग द लिंक एंड द QR कोड। योर प्रिडिक्शन इज प्रिसाइज एज कैलिपर, थैंक यू वेरी मच। एंड अब की बार 400 पार देखते हैं अकॉर्डिंग टू दिस पोल। यस, सो देर आर सो मेनी पीपल हु आर बुलिश। तो बहुत टाइम बाद मैंने देखा है कि लोगों ने इतना स्ट्रॉन्ग बुलिश पोल किया है आज के दिन में, यूजुअली नहीं करते। And Pankaj, great to have you also as a mentee. Looking forward, me as well. So 80% people have voted today that the market is going to be positive, which means market should go up. And if market is going to go up, which means the existing government should come to power. That's socioeconomic study. I'm ending the QR code. आप लोगों ने join कर लिया होगा WhatsApp community. Give me a thumbs up. And people on YouTube, do not forget to like, share, and spread the word. Comment लिखना ना भूले आप लोगों के, बहुत important होते हैं. So do ensure you are putting your comments also there. So very quickly, let me now move forward on the charts. बातें तो चलती रहेगी दोस्तों। यहां पर देखते हैं निफ्टी के चार्ट पे व्हाट इज द ओवरऑल रुझान एज पर निफ्टी चार्ट। लेट अस लुक एट दैट। लेट मी जस्ट शेयर अक्रॉस माय स्क्रीन। वेयर इज माय जूम गॉन? एंड आई एम गोइंग टू शेयर अक्रॉस माय स्क्रीन वेरी क्विकली। और दोस्तों कल परसों के लिए आप लोग रेडी है क्या? 1st-2nd June we have Sutra of Waves. So it's going to be an exciting learning for all of you who are a part of the Gurukul for the wave theory. And we are going to do a lot of things. We are going to forecast. We are going to look at stocks. काफी सारी चीजें हम देखेंगे. Whoever are part of the wonderful program. And यहाँ पर बहुत ही क्विकली मैं डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे चलता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, let's look at monthly time frame also. Monthly, because we have ended the month without the clutter of the event. अगर हम monthly time frame पे देखेंगे तो Nifty is moving up, but the candle size is definitely reduced. अगर आप देखेंगे तो छोटा छोटा कैंडल बना के Nifty is going on the upside. And यहाँ पर हम देख सकते हैं फिलहाल के लिए मंथ बना है डोजी कैंडल विच इज इनडिसिसिव। सो मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है वो मैं बताऊंगा। ये है वीकली ट्रेंड फिलहाल के लिए। दैट्स द वीकली ट्रेंड। सो वीकली ट्रेंड टर्न्ड पॉजिटिव हियर एज पर द 3 कैंडलस्टिक रूल। आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट डिस्कशन, वो हमने वेबिनार्स में किया है। 3 कैंडलस्टिक रूल्स के हिसाब से वीकली ट्रेंड टर्न्ड पॉजिटिव। दिस weekly candle usually does not form before the market election outcome, usually does not form on the market before the election outcome, but this time it has happened. So this is not a very strong sign. This indicates कि मार्केट थोड़ा सा नर्वस है, वो पता चल रहा है यहाँ पर। और अगर हम डेली चार्ट पे जाके देखेंगे, overall we can clearly see after forming a top here, low, so we have retraced the level. So many of you would like to know कि यार मैंने वो 22,420 का लेवल कल के दिन में लिखा कैसे था, क्योंकि निफ्टी formed a low at 22,417 and reversed sharply from there. That's the concept of Neo Wave actually. If you would like the concept of Neo Wave, then it is actually the central power area of the wave. So सेंट्रल पावर एरिया क्या होता है? अगर बहुत स्ट्रॉन्ग वेव ऊपर गई है तो जो सेंटर एरिया होता है उसका, दैट एक्ट्स एज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। सेंटर एरिया हो गया अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ द एंटायर मूव, which will act as a support. So this is known as the central power area of wave theory. Also, my expectation was that Nifty is going towards the upside in the form of wave A. I'll show that. After completing A, it might form a triangle pattern. Not after A, the entire pattern can form a triangle. Or as per the triangle rules, at least 50% retracement should happen of this up move. So वो हो चुका है। अगर मैं अभी वेव थियरी पे जाऊं और यहाँ पर रिट्रेसमेंट चेक करूं, so from the lows I am talking till the high, Nifty has retraced more than 50%. So whatever is the minimum requirement that I wanted for Nifty to do has happened by retracing it by 50%. तो ये सब नियो वेव के रूल्स है जिसके बेसिस पे ये लेवल्स मिलते हैं,
जिसके बेसिस पे ये गाइडलाइंस के बेसिस पे ये लेवल्स में डिराइव करता हूं, और मैंने जो ट्वीट किया था 22,420, तो ये सीक्रेट अभी आप लोगों को भी पता है, दैट व्हाई आई ट्वीटेड अक्रॉस निफ्टी टू बी bottoming in the zone of 22,490 to 22,420, which happened, but the follow-up action is yet to be witnessed. We are yet to see that follow-up action. What is concerning sign for me is that this was a very important price action support area. 22,760 के आसपास का जो एरिया था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन सपोर्ट एरिया था. मार्केट ने उसे रिस्पेक्ट नहीं किया और नीचे आ गया. इफ आई look at it very very closely without the clutter of any data, इंडेक्स, मैं वेनेसडे को हमारे मेंटरशिप सेशन में भी यही बता रहा था, दैट इंडेक्स इज स्टिल एट द लेवल विच इट वाज अबाउट इन मार्च. तो मतलब अभी तक मार्च अप्रैल मई खत्म हो चुका है, 3 महीनों में देयर इज एब्सोल्युटली नो नेट प्रोग्रेस दैट वी हैव सीन. There is absolutely no net growth that has happened in these 3 months of time, which is not a very good sign. मतलब इलेक्शन है, बहुत सारा पैसा बाहर आता है इलेक्शन में, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, और बहुत सारा पैसा आने के बाद भी वेलोसिटी ऑफ मनी इंक्रीजेस. डिस्पाइट ऑफ दैट मार्केट ने ज्यादा कुछ नहीं किया, विच इज अ साइन ऑफ कंसर्न फ्रॉम अ पोजिशनल पर्सपेक्टिव. ठीक है. सो शॉर्ट टर्म के लिहाज से क्या एक्सपेक्टेशन है? अभी तो हम इलेक्शन की आउट बात करते हैं. व्हाट डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द मार्केट? सो लेट मी जस्ट रिमूव दिस अक्रॉस and I'm going to go on 1 hour time frame chart. If you're looking at the 1 hour time frame chart and the overall pattern that is formed from the lows, this is the overall pattern that I am seeing on the Nifty short term time frame chart. So this is Nifty hourly chart that you can see here. Everyone is able to see my screen? Nifty hourly chart. And over here, if you look at Nifty, Nifty retraced precisely 50%, which is the central power area, as I said, central power area of the prior wave A. We are now in wave B, which is still ongoing. फिलहाल लग रहा था कंप्लीट हो गया होगा, लेकिन उसने मोमेंटम नहीं दिया. So it went about 22,610, but still failed again from there. So we are now in wave B, and post its completion, wave C should start higher. That's the expectation as per the wave theory. I can be wrong. This is just a game of probability, दोस्तों. And start higher till where? At least कुछ नहीं तो 50% of this move. मतलब मेरा expectation है यार, कुछ नहीं तो 22,870, 880 तक तो जाएगा. So 22,880 levels at minimum is what I am expecting. And यहाँ पर अगर आपको समझना है बहुत डिटेल में, तो वो वेव थियरी के बेसिस पे 50% इज माई एक्सपेक्टेशन, इफ नॉट मोर. 50 to 61.8% होगा. 880 मतलब 61.8% हो गया. 50 मतलब अराउंड 780 हो जाएगा. आई एम नॉट मेजरिंग इट टू द पॉइंट. आई एम जस्ट सिंपली टेलिंग यू ऑन rough estimate, but that's the range that I'm expecting markets to go maybe on Monday. Okay. On Tuesday, there is a possibility we might move towards 23,290. That's the best case scenario on Tuesday. Why? So overall, if you look at it, we might have completed wave X here or maybe somewhere around here. That's there. And from there, we are now forming a triangle pattern. So wave theory is all about patterns connection. ठीक है. One pattern formed in the form of diametric, जो यहाँ complete हुआ. We got an X wave down, ABC के form में. We got another pattern which was just absolutely sideways, which got completed at the lows. And now we are completing wave A. Possibly we will complete wave B. Once we complete wave B, we will see the start of wave C on the upside. This wave C, whichever wave C starts, wherever it starts, will be at minimum, as I said, 50% of this move. So we are expecting it to go towards 22,800 odd levels. 61.8 around 880 के आसपास आएगा. Measure करके देख लेते हैं यार. I'm just rough estimating, but let us just measure and check. Okay, so we are getting around 850 as the zone.
दैट्स द एरिया। तो जिसके आसपास तक निफ्टी जाना चाहिए, 850 880 के आसपास तक निफ्टी जाना चाहिए, एंड दैट्स द एक्सपेक्टेशन। एंड possibly it will cross lifetime high levels of 23,110. So I'm betting on the fact that, but with a hedge. So if you are a options trader, okay, many of you might be trading in options, right? You might be trading in options, call, put, and आप सोच रहे होगे कि क्या करना चाहिए. First of all, if you are trading in option, you should always be trading with a hedge. Okay, very very clearly, it's very important कि hedge के साथ में trade करना चाहिए, और साथ ही में without hedge you can't really trade, whether you buy option or whether you sell option. So if you are buying an option, even if I'm buying an option, you can create some kind of a spread. Now you can create a are there options trader? Let me first take a poll on that. Let me just understand how many of you are trading options, and especially if you are trading into option strategies. So okay, I can see, are you an options trader? I'm trading on I'm raising the poll, and people on YouTube, do not forget to uh, be there on the Zoom platform if you want to join in, and do not forget to subscribe and give your comments. Okay, I can see so many of you are trading in options. तो ठीक है, options की बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं करता हूँ. ऑप्शंस का चार्ट में अगर आपको दिखाऊंगा ना, मजा आ जाएगा देख के. जो लोगों ने थियरी पढ़ी है ऑप्शंस की और प्रैक्टिकल चार्ट नहीं देखा है, वो तो चकाचौंध रह जाएंगे आज के मूवमेंट के बाद में. I can give you hundreds of reasons why, but let me open up my Go charting screen and put across an option chart in front of all of you. तो आप अगर देखोगे ना, तो you will be shocked to see कि यार मार्केट आया नीचे. निफ्टी केम डाउन फ्रॉम 22,600 टू 22,500 के नीचे. कॉल ऑप्शन क्या होना चाहिए आइडियली? प्रोवाइडेड इंडिया विक्स इज नॉट इंक्रीजिंग, इट इज एट द सेम लेवल. If Nifty is falling by 100 points on the downside, call option should fall, right? I mean, common sense है. कोई भी बात करेगा यार, option तो गिरना चाहिए ना. I'm ending the poll, and it should melt. But if you look at the chart today, the call option prices increased when Nifty was down by 100 points, and India VIX did not move anywhere. India VIX did not move anywhere. मतलब VIX इंडेक्स वही था, कॉल ऑप्शन बढ़ रहा था निफ्टी गिरने के बावजूद भी, which indicates why you cannot theoretically trade options when you are when you are looking at the event like elections. So you why you cannot theoretically trade. Practically trade कर सकते हो, practical trading is possible, but theoretically you cannot trade options if you are looking at that. So that's how you have to be understanding options very very clearly. So let me go on the options chart also and share across कि क्या लग रहा है यार यहाँ पर. Let me just open up my Go charting screen, where I am going to take you to the world of options and open interest profile. बहुत interesting है. Open interest profile भी काफी interesting है. If you look at the open interest profile and the options chart. So let me just share my screen. This is the options chain, and this is on Go charting. And if I am going to put across say 22,500 का 600 ले लो या 500 ले लो, कोई भी कॉल ऑप्शन ले लो. इफ यू आर लुकिंग एट द कॉल ऑप्शन ऑफ 22,600 यहाँ पर. ओके, लेट मी जस्ट चेक अक्रॉस वेयर इज द ऑप्शन चार्ट गॉन. सो अगर मैं देखूंगा यहाँ पर से ऑप्शंस चार्ट में, आई विल जस्ट पुट अक्रॉस. वाह, यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ पर आया. वेयर आई एम गोइंग टू पुट अक्रॉस the options data. Now, where is my options chart gone? I think they have changed the layout. Wow, wow. Okay, that's the chain and that's the chart. I should see the chart somewhere. And I'm just figuring out where is the chart gone. Add to chart. Contract added to price chart tab. But where is it gone? Oh, that's interesting. I wanted to show you an option chart.
but not able to find it here. It was there on the right hand side somewhere. That's strange. Option chain was there under tools. I'm bad with that. अगर कोई layout change हो जाता है ना, तो I become really bad with it to search for certain things. And this is alerts manager news under tools watch list. That's my watch list. Oh, finally I found it. So मेरा 20 options ये रहा, and I'm going to search for watch on 22,600 का option. If I'm looking at 22,600 का option, this is where you can see. बहुत ही interesting है, and I'll go on a 15 minutes time frame chart. Now look at it. बहुत interesting है. Look at the volume profile also. साथ में volume profile भी plotted है. You can see huge volumes have happened at this point of time. This is an options chart with huge volumes that has happened, and you can clearly see कि 22,600 का कॉल ऑप्शन है ये, आउट ऑफ द मनी. एंड यहां पर जो लो बना था 1245 को लो बना, वहां से 343 पे, और वहां से चल के ये आ गया 423 के लेवल्स पे. एंड दिस इज अ वीकली एक्सपायरी. नाउ this option has gone up from 1245 onwards by 100 points. And वहीं पे अगर आप निफ्टी को इस चार्ट पे देखो, and you can clearly see that निफ्टी from 1245 levels अगर हम देखेंगे, ऊपर आके sharply नीचे आया. We can clearly see that option value का लो इसके नीचे होना था, but it is still at the higher level, and you can pick up any strike price of call options. Put options मैंने check नहीं किया because I'm betting on the call side. So that is how it has behaved. So जो theoretical options data देख के आ रहे, वो इस मार्केट को ट्रेड नहीं कर सकते. आपको प्रैक्टिकल चार्ट पे देख के बेट करना पड़ेगा. ऑप्शन चार्ट को डायरेक्टली देख के आप बेट कर सकते हो. बेसिस ऑफ ऑप्शंस मंत्रा में हमने काफी सारे मेथड्स किए थे. दैट विल वर्क फैंटास्टिक, including the Keltner channel, KST techniques, and all of those things. Now, very interesting sign is on the open interest profile. Okay, this is the open interest profile. If you are able to see the chart here, open interest profile पे अगर आप देखोगे, यहाँ पर we can still see, despite of Nifty whipsawing around 22,500 चार्ट पे, अगर मैं 1 आवर चार्ट पे, दिस इज 15 मिनट्स, मैं 1 आवर चार्ट पे अगर जाता हूं, यू आर एबल टू सी द चार्ट हियर एवरीवन. सो 1 आवर चार्ट पे अगर आप देख रहे हो, निफ्टी 22,500 का जो स्ट्राइक है, पुट अभी भी काफी ज्यादा है कंपेयर टू कॉल, विच मीन्स पीपल आर स्टिल बुलिश एंड कमिटिंग ऑन द अपसाइड. दिस इज क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट, दिस इज नॉट फॉर द वीकली एक्सपायरी. ये क्यूमुलेटिव है, मतलब सारी एक्सपायरीज को कंबाइन करके साथ में. अभी ये देखने के बाद में पता चलता है कि यार ओवरऑल रुझान मार्केट का रिवर्सल पे है, बायस नेगेटिव है, रुझान टर्न हो सकता है, बिकॉज वी आर एट अ वेरी इंपॉर्टेंट जंक्शन. नाउ इफ आई गो ऑन द वॉल्यूम प्रोफाइल, दिस इज ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल. So if I look at the volumes data, okay, I look at futures here, and निफ्टी फ्यूचर्स पे अगर मैंने देखा, वॉल्यूम कहां पर हो रहा है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. इफ यू लुक एट द बिगर पिक्चर, यू विल सी द फार अवे वॉल्यूम्स. ओके, आप देख सकते हो कहां पर वॉल्यूम्स. इफ आई लुक एट एंड जूम इन द चार्ट, I can see that the major volume activity that has happened at the level of 22,756, including this high, and we are currently at that specific zone. I can, okay, let me hide the watch list. Where is the watch list gone? That's the news. That's the watch list. Okay, that's the watch list, and इसे मैं छोटा कर देता हूँ. तो मेजर वॉल्यूम, दिस इज फ्यूचर्स डेटा एंड फ्यूचर्स 22,756 अभी एक्सपायरी चेंज हो चुकी है, इसलिए फ्यूचर्स डेटा आप वो वाला देख रहे हो. सो इफ यू लुकिंग एट द फ्यूचर्स डेटा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल द डेटा इज इवनली स्प्रेड, मतलब यहाँ पर कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा है.
which is a state of confusion. Secondly, 22,756 futures price है. Okay, that's where the hurdle is. That's where the maximum participation has happened. So expectation ये है कि ये जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे निफ्टी क्लोज हुआ है, which is around the level of 22,550 and spot के हिसाब से this is futures. So उसके आसपास के लेवल पे बंद हुए 700 पे फ्यूचर्स पे बंद हुए 150 पॉइंट्स का प्रीमियम है. And if it manages to move back about 22,610, now you're getting the point why 22,610 has been the, how did I derive that level for sharing it across in the morning? Key 22,610, if you look at this data, you will be able to make sense that 22,610 is spot data, 22,750 is the futures data. And इसीलिए important था क्योंकि ये प्राइस एक्शन एरिया है, मतलब बड़े प्लेयर्स ने यहां पर पोजीशंस क्रिएट कर रखी है. सो निफ्टी पोजीशंस आर क्रिएटेड नियर 22,610 levels as per spot, and this can be clearly seen from volume profile along with open interest profile, जहां पर हमें पता है कि 22,500 put sellers are still active. Now combining this data with Neo Wave, what is next? What do you think? Looking at this data, simple data है. अभी तक हमने इवेंट के बारे में बात की, हमने डेटा देखा, अभी हम चलेंगे वापस से वेव थियरी में. So once we look at the event, we look at the data. Now we know that 22,750 is the key level that we have to watch, and once the 6, which is 22,610, so बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है. अगर मंडे को मतलब गैप होगा ऐसा मान रहे, एग्जिट पोल से बहुत सारी उम्मीदें मुझे नहीं है इतनी. आई एम बेटिंग मोर ऑन द ट्यूसडे rather than on the Monday, because exit poll more or less might show around 360, 350, I don't know, for the NDA. But my expectation is 350, 360 might be the exit poll outcome, but I'm expecting maybe 360 is the BJP seat that we should get on Tuesday. That's what I'm expecting. So it is not going to be taken out easily, but if that gets, that's what we know. So 22,500 नीचे नहीं निकलेगा easily, 22,610 ऊपर निकलना चाहिए, मोमेंटम के साथ, गैप के साथ, और सस्टेन होना चाहिए, तो हम जाएंगे 23,300 तक. दैट्स माय बेट ऑन मार्केट. अगर नहीं भी गए, स्टिल आई विल मेक मनी. इफ गए तो विल मेक अ लॉट ऑफ मनी. अगर नीचे गए, आई एम ट्रेडिंग विद अ हेज. सो नाउ इफ आई कम बैक टू, I can be wrong. I can be wrong, but any which ways, if I come back to this chart of Nifty, which is on the basis of wave theory, what is the expectation is that this is wave B, which is currently going on. Once we get the B completion, which is on the move above this high, we will go back to the levels of 50%. So हमारा target क्या हो जाएगा? 22,880 is the target for Monday. So let me just note it down again. So what is our target for Monday? I'm expecting 22,000. Not Monday, maybe Tuesday also possible, क्योंकि 880 थोड़ा super bullish हो गया आप लोगों के लिए भी. 22,880 and then followed by 22,290 are the target levels that I am looking at for the market, provided we do not go decisively below the level of 22,420. That's going to be a very important zone. This can be target 1 and this can be target 2. So this is what can be the target that you are looking at. But दोस्तों अगर आप options पे bet कर रहे हो, if you are betting on the options, 23,000, मैं 22,000 में रह गया. This has to be 23,290. So अगर आप options पे bet कर रहे हो, you have to be yes 23,290. So options में you have to be very careful in trading options, because when you are trading in options, you need to know that the behavior of option instrument is going to be very different
जो आपने आज तक कभी विटनेस नहीं किया होगा। अगर ये पहला इलेक्शन आउटकम है आपका, आपने ऐसा मूवमेंट ऑप्शंस में पहले कभी देखा नहीं होगा, ठीक है। एंड इट इज नॉट गोइंग टू बी एज पर द टेक्स्ट बुक, इट्स गोइंग टू बी एज पर द प्राइस, इट्स गोइंग टू बी एज पर द गॉड विच इज भाव भगवान છે, प्राइस इज गॉड, so it is as per that going to behave. So if you are looking at this Nifty target levels that we are looking at uh, is around 22,880, followed by super bullish scenario 23,290 levels. Now post these levels there should be correction, that's the expectation as per Neo Wave logics. So I'm talking reading purely from chart perspective. So इंडिया विच तो और बढ़ेगा, अभी तो शुरुआत है, अभी तो देखो अभी मंडे बाकी है. So as per this logics, I'm going to be looking at the these as the targets for Nifty from here on, and देखते हैं कि किस तरीके से बिहेव करता है. ये टारगेट्स आते हैं नहीं आते, ये सारी चीजें देखना है हमें, बट that's what I am betting on. Is it interesting? Looking at the chart becomes life so easy कि भाई हमें पता है क्या करना है इलेक्शन के पहले. If the chart reading is right, I can be of course wrong, बट रिस्क है उतना तो लेना ही पड़ेगा. रिस्क लेंगे तो ही तो मजा है लाइफ में. और विक्स इज गोइंग टू कूल ऑफ ऑन ट्यूसडे. सो ट्यूसडे रुझान के बाद में वो कूलिंग ऑफ पीरियड शुरू होगा. सो अंटिल आई एम एक्सपेक्टिंग कि 10 o'clock तक इट्स स्टिल गोइंग टू बी दैट मच, एंड देन पोस्ट द 10 a.m. on Tuesday, VIX will start dropping. So whatever you have to do, you have to take action by 10:15 तक, जो भी positions अगर आपकी है. So you have to take action by then, and you have to then bet on how to go about it. So that's what I'm expecting basis of the chart. So this is going to complete B. We might then have wave C, and once we have the C wave completing, I'll be definitely notifying it here on my Twitter handle on the platforms, and you will be learning about that. सो बैंक निफ्टी के बारे में आज नहीं बात करूंगा दोस्तों. बैंक निफ्टी स्टॉक्स के बारे में हम बात करेंगे कल के दिन में. वी हैव Sutra of Waves which is happening tomorrow and day after tomorrow. I just want to know how many of you are already a part of the either the Brahmastra current batch or the Sutra of Waves which is happening, or the Trishul program. So all of you are part of the program tomorrow and day after tomorrow, and it's going to be really interesting what we are going to discuss. ये जो साइंस मैं आपको अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर दिखा रहा हूँ, वो मैं आपको सिखाऊंगा प्रैक्टिकली कि कैसे इस साइंस को यूज किया जाता है, कैसे कंबाइन किया जाता है इन अ वेरी सिंपल सिस्टमैटिक साइंटिफिक वे. हाउ यू शुड बी knowing about this science, and how did you come to know wave B is already over? Too short a time to discuss that. कल बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में. We will talk about it in detail, and I'm open for questions if you have any questions. Very quickly, I'm just taking a poll just to understand how many of you are a part of this wonderful program which we have on Sutra of Waves, or you are part of any of the other programs that we have. Bidyut Kumar, glad to have you. He's a part of the Gurukul. He's a member of Gurukul also. Today end of day, I took a hedge trade by 6th June call and hedge it with the sell of 27th June. Okay, that's thoda sa Bidyut. I have done a little difference. I have bought the month end and I have sold the recent one, क्योंकि टाइम की जो डिटोरिएशन होगी वो करंट एक्सपायरी पे सबसे ज्यादा होगी. So it's fine, you have hedged to some extent. That is definitely good. But deterioration will happen maximum on the current expiry. That's what I'm betting on. You're betting more on the delta side. I can see that. So up to the risk that you are taking. So बहुत similar kind of a bet है. But I'm not doing that much out of the money. Okay. There's talk about Hindenburg-Ullman and Titanic syndrome in the US, and the markets are likely to fall here too. Let them talk what they have to talk. Market should fall eventually, yes. That's what I'm also expecting. क्योंकि हमारा ये जो पैटर्न है लास्ट लेग है. That's what I'm seeing.
but let me not be keeping everyone nervous before the euphoria. At least enjoy the euphoria before getting nervous. So I will talk about it later. Let's see how it happens over the next 2-3 days. Brahmastra is going to be starting in July, but if you are a part of July Brahmastra, next July mein we are planning across maybe, but abhi existing is anyways ongoing. So वो July में होगा. Okay, and okay, great. So काफी सारे जन काफी सारी चीजें bet कर रहे हैं. Awesome guys, so it's wonderful. And in case you are a part of this, you will get a Zoom link invite for Sutra of Waves. अगर आप पार्ट है लिंक शेयर कर दीजिए सबके साथ में. Whoever is part of it, you will get a Zoom invite. If you have not got Zoom invite, you can simply contact on 99204 22202. And यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हो. शेयर द कॉन्टैक्ट नंबर प्लीज सो दैट दे कैन कॉन्टैक्ट यू फॉर एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स, एनी हेल्प रिक्वायर्ड फॉर दैट मैटर. यू कैन बी इन टच. ऑसम गाइस, सो आज का फ्राइडे एट 4 आई थिंक यहीं पे खत्म करते हैं. दिस वेव बी इज अ पार्ट ऑफ डायमेट्रिक. कौन सा वाला डायमेट्रिक? सो देयर आर मल्टीपल्स दैट वी आर गोइंग टू सी. सो कल देखेंगे चैतन्य. माय प्लेजर ऑलवेज एज यूजुअल. एंड फैंटास्टिक गाइस, सो आज यहीं पे समाप्त करते हैं. कल परसों की ट्रेनिंग है एंड वी आर गोइंग टू डू लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर. सो प्लीज कीप अ वॉच एंड पीपल ऑन यूट्यूब डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अक्रॉस द चैनल. वी आर अब की बार 55,000 पार किया है यूट्यूब पे. सो थैंक यू एवरीवन फॉर डूइंग दैट एंड योर कमेंट्स रियली हेल्प मी टू make my channel much more better and stronger. Have a wonderful time, guys, and become a wonderful trader. Ashish Kyal signing off, and we are going to have some exclusive sessions tomorrow and day after. It's going to be an amazing thing together. Okay, there were a lot of chats that I'm reading. Umesh, please do that. Whatever works, it's fantastic. And thank you very much for joining in, and be ready for tomorrow and day after. We are going to start at 10. The session is going to be until 4. There will be breaks in between, and we will be looking at practical applications with Ichimoku and Fibonacci tools. साथ में 2-stage confirmation technique and pure Neo Wave के basis पे, Elliott Wave के basis पे हम सारी चीजों को study देखेंगे और देखेंगे how it works. Okay, awesome guys, have a wonderful time.